Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana vraja-jana Yashoda Nandana vraja-jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana vraja-jana Yashoda Nandana vraja-jana Yamuna Tira Vanachari Mana Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribo, 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 Gora Haribo. Śrīla Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Krishna Balarama ki jai, Shri Jagannath Subhadra Baladeva ki jai, Shri Radha Radhika Ramana ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Paragamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Tato jayamudirayet Nashta prayeshva vadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke Bhaktir bhavati naishtiki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में उपस्थित हैं परम पूजनीय कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज। तो एक संक्षिप्त परिचय। महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। इस्कॉन मूवमेंट से 1972 में जुड़े और 1973 से 75 तक महाराज ने श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किया और एम्स्टर्डम में महाराज ने पुजारी की सेवा की। उसके बाद 1977 से 79 तक पूरे यूरोप में महाराज ने भ्रमण करके प्रचार किया। 1982 से 85 में जर्मनी में जो भगवान नरसिंह देव स्थापित हैं तो महाराज उसकी पूरी वर्शिप ओवरसी करते थे। और 1987 में जीबीसी ने महाराज को दीक्षा गुरु के रूप में नियुक्त किया। शायद पूरे इस्कॉन में एकमात्र ऐसे ब्रह्मचारी थे जो ब्रह्मचारी होकर साथ में दीक्षा गुरु थे। और 1995 तक फिर महाराज ने इस्कॉन में जितने भी मंदिर हैं उसमें जितने भी अर्च विग्रह हैं उनकी जो प्रणाली है पूजा अर्चन की उसका जो मैनुअल है तो वो महाराज ने ही कंपाइल किया। पंचरात्र प्रदीप इस्कॉन्स मैनुअल फॉर टेम्पल वर्शिप। और 2005 तक महाराज इस्कॉन के डीटी वर्शिप मिनिस्टर के रूप में महाराज ने सेवा की। और इसके बाद 1972 में महाराज ने जब ज्वाइन किया इस्कॉन तब अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी। और फिर 2005 के बाद महाराज ने वो स्टडीज़ रिज्यूम की, अपनी बैचलर्स पूरी की, मास्टर्स पूरी की। फिर महाराज को ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करना था तो इसलिए महाराज ने एक बार दोबारा से मास्टर्स पूरी की, फिर पीएचडी पूरी की। और उसके बाद महाराज ने कई पुस्तकों को प्रकाशित किया। उनका जो डॉक्टर डाइसर्टेशन था वो अटेंडिंग कृष्णाज इमेज चैतन्य वैष्णव मूर्ति सेवा एज डिवोशनल ट्रूथ, बहुत ही विख्यात है ये पुस्तक, विशेषकर इस्कॉन के सर्कल्स में और बाहर जितने भी इंटरफेथ कम्युनिटीज़ हैं। महाराज ने डीन ऑफ स्टडीज़ के रूप में भी सेवा की भक्तिवेदांता कॉलेज राधा देश में। और कई यूनिवर्सिटीज़ में महाराज प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने के लिए जाते हैं। और अभी महाराज वृंदावन जा रहे थे तो यहाँ दिल्ली में थे और महाराज ने अपना संग प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। आइए महाराज का तहे दिल से स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. So, do we post the verse for chanting? Ah, here it is. Okay. So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 25, verse number 18, I believe. आज सुबह हम पाठ कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 25 और श्लोक संख्या 18 से। tasmān mac-charaṇaṁ goṣṭhaṁ tasmān mac-charaṇaṁ goṣṭhaṁ man-nāthaṁ mat-parigraham man-nāthaṁ mat-parigraham gopāye svātma-yogena gopāye svātma-yogena
Soyam me vrata āhitaḥ. Soyam me vrata āhitaḥ. Tasmāt mac-charaṇaṁ goṣṭhaṁ. Man-nāthaṁ mat-parigraham. Gopāye svātma-yogena. Soyam me vrata āhitaḥ. Ladies? शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा। तस्मात् इसलिए, मत-शरणम मेरी शरण में आया हुआ, गोṣṭhaṁ गोप समुदाय, mat-nātham मुझको अपना स्वामी मानकर, mat-parigraham मेरा ही परिवार, गोपाये मैं रक्षा करूंगा, sva-ātma-yogena अपनी योग शक्ति द्वारा, सह अयम यह मैं मेरे द्वारा, व्रतः व्रत प्रण, आहितः लिया गया है। अतएव मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूं, मैं ही उनका स्वामी हूं और वे मेरे अपने परिवार के ही हैं। मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत जो ले रखा है। तात्पर्य, मत-शरणम शब्द न केवल ये सूचित करता है कि कृष्ण व्रजजन के एकमात्र आश्रय थे, अपितु ये भी कि कृष्ण ने उनके बीच अपना घर बना रखा था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनेकार्थ-वर्ग कोश से शरणम गृह-rakṣitroḥ उद्धृत किया है। इस तरह शरणम शब्द घर या रक्षक का द्योतक हो सकता है। वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना प्रिय बालक, मित्र, प्रेमी तथा प्राण मान रखा था और भगवान उनकी भावनाओं को जानते थे। इस तरह कृष्ण इन भाग्यशाली लोगों के बीच रहते हुए उनके घरों तथा खेतों में विचरण करते थे। स्वाभाविक है कि वैसे घनिष्ठ भक्तों की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते। Mukam karoti vachalam pangum mangayate girim yat kripa tamaham vande Śrī Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa is preparing to perform one of his most wonderful pastime, most wonderful acts. भगवान कृष्ण तैयारी कर रहे हैं अपनी सबसे अद्भुत लीला को प्रयोजित करने के लिए। सबसे अद्भुत. And we are by Śrīla Vyasadeva and Shukadeva Goswami's grace, we are allowed to
listen in as Krishna thinks. श्रीला व्यासदेव और श्रीला शुकदेव गोस्वामी की कृपा से हमें ये सुविधा है कि हम ये श्रवण कर पा रहे हैं जो कृष्ण सोच रहे हैं. We are all thinking, we are quite familiar with our own thinking. We don't usually appreciate that the Lord also thinks. हम सोच रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं उससे हम स्वतः परिचित हैं, परंतु अक्सर हम इस बात की कम सराहना करते हैं कि भगवान स्वयं भगवान भी विचार करते हैं. There's a difference between our thinking and the Lord's thinking. हमारे सोचने में और भगवान के सोचने में एक अंतर है. And there are also similarities. और कुछ समानताएं भी हैं. The difference is that whenever Krishna thinks, it is perfect thinking, and it is always for the benefit of everyone. तो अंतर ये है कि जब भी कृष्ण विचारशील होते हैं तो उनका विचारशील होना पूर्ण है और पूर्ण रूप से सिद्ध है, और वह सदैव दूसरों के हित के लिए होता है. Whereas when most of the time, most of us, when we are thinking, our thinking is about ourselves, our own benefit. और हम में से अधिकांश लोगों के अधिकांश समय जो विचार होते हैं वो खुद से संबंधित होते हैं कि खुद का स्वार्थ कैसे पूरा किया जाए. You can monitor your thinking. You can observe your thinking and see what is it doing? How is your mind working? आप अपने विचारों को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपके विचार अक्सर हैं मन के अंदर. And you may notice that it tends to be a bit self-centered. और आप ये जानेंगे, आप ये बात देख सकते हैं कि अक्सर वो विचार खुद पर ही केंद्रित होते हैं. Here we see that Lord Krishna's thinking is very different. परंतु हम यहाँ देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जो विचार हैं वो बहुत अलग हैं. What is his vichar? He is thinking how to execute this particular pastime for the benefit of everyone, including Lord Indra. वे सोच रहे हैं कि इस लीला को कैसे संपन्न किया जा सके सभी के हित के लिए, जिसमें इंद्र भी सम्मिलित हैं. Of course, we could say, well, Krishna already knows what he's going to do. He doesn't have to think over what he's going to do. तो हालांकि हम कह सकते हैं कृष्ण तो जानते हैं कि वो क्या करेंगे, उनको ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है. But that can also be part of his pastime, that he allows himself to think something through. Let's see what's the best way to do this. परंतु उनका सोचना भी लीला के अंतर्गत आता है कि ये देखना कि क्या सबसे अच्छी चीज की जा सकती है. Lord Krishna also likes to surprise himself. भगवान कृष्ण अपने आप को हैरत अंगेज करने के लिए पसंद करते हैं. खेली पसंद करते हैं, तो स्वयं को आश्चर्यचकित करने के लिए. So because otherwise, Krishna is having eternally his pastimes, and if everything is all worked out in advance, that could become boring. अन्यथा कृष्ण तो शाश्वत रूप से नित्य लीला कर रहे हैं, और अगर ये माना जाए कि सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो ये चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएंगी. बहुत बोरिंग हुए. बोरिंग हुए. बोरिंग इज हिंदी
Shabd. It's an English word. You don't have a Hindi word for boring? ऊब जाएंगे, ऊब जाएंगे. Oop? Oop jayenge. That sounds really boring. Yeah, so we see him working out, what shall I do? तो वो विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है. And he makes a decision. और वो एक चुनाव पर आते हैं. Krishna is, when he makes a decision, it is because all of Krishna's desires are immediately fulfilled, then his decision is very consequential. तो जब कृष्ण किसी चुनाव पर आते हैं तो उनके सारे चुनाव स्वतः पूरे हो जाते हैं, तो जो भी वो चुनाव ले रहे हैं उसका परिणाम होता है. In verse 16, he uses the expression ātma-yoga, ātma-yogena sadhaye. I shall make an arrangement. How? By my mystic power, ātma-yogena. तो श्लोक संख्या 16 में वो शब्द का इस्तेमाल हुआ है आत्मयोगेना, यानी कृष्ण अपने स्वयं की योग शक्ति से इस चीज को संपन्न करेंगे. And he's making an arrangement specifically here. He's focusing on how he's going to teach a lesson for Lord Indra. और यहाँ पर विशेष रूप से वो इस बात की योजना कर रहे हैं कि कैसे इंद्र को सबक सिखाया जा सके. And he explains in verse 17, he elaborates, what is the purpose of this lesson? और श्लोक संख्या 17 में वो बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है. It is to break the false prestige of those bereft of goodness. तो उद्देश्य है मिथ्या अभिमान को भंग करना जो भगवान कृष्ण के उद्देश्य के विहीन है. Abhiman, this is a problem. It's a problem for all conditioned souls. जो मिथ्या अभिमान है ये समस्या है सभी बद्ध जीवों के लिए. And so even the devas have this problem. और यहाँ तक कि देवता गणों में भी ये समस्या है. This does not mean that we don't respect the devatas. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवताओं का सम्मान नहीं करते. They are certainly to be respected. Sometimes we laugh at Lord Indra for his foolishness. निश्चित रूप से उनका सम्मान किया जाना चाहिए. कभी कभार हम हंसते हैं इंद्र की मूर्खता पर. But we should be careful. परंतु हमें सावधान रहना चाहिए. After all, he is Krishna has given him a very powerful position. कृष्ण ने उनको बहुत ही शक्तिशाली पद दिया है. So we must be careful and recognize this is all pastime. तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. ये लीला है. And Krishna is teaching a lesson. Why? Because he cares. He cares about Lord Indra. He wants to help him. और कृष्ण यहाँ पर सबक सिखा रहे हैं. क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि वो इंद्र से प्रेम करते हैं, उनको उनके परवाह करते हैं. And in today's verse, verse number 18, he's turning his attention now to the other side of his purpose. और आज के श्लोक में, श्लोक संख्या 18 में, वो एक दूसरी तरफ से अपने दूसरे उद्देश्य की ओर केंद्रित हैं. But he's connecting the two. Tasmāt, mac-charaṇaṁ goṣṭhaṁ. Therefore, because I need to teach a lesson to the devatas, therefore I'm going to protect the goṣṭha. और ये जो उद्देश्य है पिछले उद्देश्य से संबंधित हैं, तभी शब्द का इस्तेमाल किया गया है तस्मात मत-शरणम गोṣṭhaṁ. इसलिए
जो ब्रजवासी हैं मेरी शरण में जो आए हैं. And then he elaborates reasons why they should be protected. और यहाँ पर विभिन्न कारणों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों उनकी रक्षा की जानी चाहिए. mac-charaṇaṁ, man-nāthaṁ, mat-parigraham. They are persons who have taken me as their shelter. mat-śaraṇam, mat-nātham, mat-parigraham, mat-śaraṇam, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में आए हुए हैं. They are persons for whom I am the Lord. mat-nātham, उन्होंने मुझे ही अपना स्वामी माना है. And they are persons who are parigraha, my family. और वो मेरे ही परिवार के हैं, परिग्रह. Now at this point, someone may protest. यहाँ पर कोई विरोध कर सकता है. And this is a theme that comes up more than once in the Bhagavatam. और इस बात की चर्चा एक बार से ज़्यादा आती है भागवतम में. That what kind of Lord is this? He is partial. ये किस प्रकार के भगवान हैं? ये तो भेदभाव कर रहे हैं. God is supposed to be equal to everyone, and obviously here he's not being equal. भगवान को तो सबके प्रति समदृष्टि होना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो भेदभाव कर रहे हैं. This is a problem, no? ये समस्या है ना. Samasya? Problem or not problem? समस्या है या समस्या नहीं है. समस्या नहीं है. क्यों नहीं? Either he's partial or he's not partial. Huh? या तो वो भेदभाव करते हैं या नहीं करते. Huh? He's not partial. Partial. Who votes that he's partial? Now you're cautious. What's the right answer? Partial? अचिंत्य भेदाभेद. Not partial. Achintya Vedava. That's always the easy way out. You can translate. तो महाराज कह रहे अचिंत्य भेदाभेद कहना ये सरल तरीका है इससे निकलने का. Yeah, we know samoham sarvabhuteshu name dvesho stina priyaha ye bhajanti tu mang bhaktya mayite teshu cha api aham. He says I'm equal, and then he seems to turn around and say, but then again, I can't resist. If someone is worshipping, is surrendered to me, what can I do? तो इस श्लोक के पहली लाइन में बता रहे हैं कि वो सबके प्रति समोह समदृष्टि रखते हैं, परंतु फिर तुरंत बता रहे हैं कि अगर कोई उनके प्रति शरणागत है, उनका भजन कर रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते. All right, so now we may say, well, this is all very well for the residents of Vrindavan, the eternal associates of the Lord. But what about me? तो कोई कह सकता है ठीक है, ये सब तो ब्रजवासियों के लिए है, भगवान के नित्य परिकर हैं, मेरे लिए क्या है? Okay, I'm trying to do some devotional service. I'm trying to do it with devotion. मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ भक्तिमय सेवा का, थोड़ी बहुत भक्ति के साथ. And yes, I'm trying my best. I think I'm trying my best. और मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपना सर्वोच्च कर रहा हूँ. So is Lord Kṛṣṇa going to protect me? तो क्या भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे? This may be our doubt. We may be a little bit having this doubt in our minds. तो मन के किसी कोने में हमारा ये संदेह हो सकता है. And
We are warned by Prahlad Maharaj in his prayers. What is it? Balasya neha sharanam pitaro narsingha nartasya chagadamu danvati madchato no taptasya tat pradividhirya ihanjasestas tadvad tavad vibo tanubritam tvat upekshitanam. He's warning us that actually in this world there's nobody to protect you. और हमें चेतावनी दी जा रही है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के द्वारा, जिसमें वो उल्लेख करते हैं कि संसार में हमारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है. Parents are meant to protect children, but it's not guaranteed that children will be protected. माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है. Boats are meant to carry one across the water, so that's their purpose, but they may not always hold. जो नाव है उसका कर्तव्य है कि यात्रियों को एक तट से दूसरे तट पर ले जा सके, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% हमेशा वो ऐसा करेंगे. Everyone has heard of this huge ship from early 20th century, the Titanic. और सबने टाइटैनिक की घटना के बारे में सुन रखा है. Titanic, there was a film, yes. और इस पर एक मूवी भी बनी है. So everyone on this ship were totally confident. This ship it is Titanic. It is no question of it being damaged. और इस पे जितने भी यात्री थे उनको पूरा विश्वास था कि हम इस जहाज पर हैं और ये टाइटैनिक है, कभी डूब नहीं सकता. And doctors, medicine, they're supposed to help, they're supposed to protect, but they can't always help, they can't always protect. In fact, ultimately, none of these types of protection will save us. और जितने चिकित्सक हैं, उनकी जितनी दवाइयाँ हैं, उनका कर्तव्य है कि मरीजों की रक्षा करें, परंतु हर केस में ऐसा नहीं होगा. Deha patya kalatradishvatma shainyeshvashatsvapi tesham pramatta nidanam pashyanapi na pashyati. It's very poetic. Pashyan api, although seeing that one is not protected by all these soldiers, one's children, one's wife, one's wealth, although one sees, still one does not see. तो पश्यन अपि न पश्यति, कि व्यक्ति देख रहा है परंतु फिर भी नहीं देख रहा. वो जानता है कि उसकी मृत्यु होगी, उसे लगता है कि उसके परिवारजन, उसके पत्नी, उसके बच्चे उसकी रक्षा करेंगे, परंतु वो नहीं देख रहा कि वो मृत्यु की ओर जा रहा है. So the whole Vedic process is to shift our faith from that which is not deserving of our faith to that which is deserving of our faith. जो पूरी की पूरी वैदिक प्रणाली है, उसका उद्देश्य है कि हमारा ध्यान ऐसी वस्तुओं से हटाना जो हमारी श्रद्धा के उपयुक्त नहीं है और उस तरफ ले जाना जो हमारी श्रद्धा के उपयुक्त हैं. We are all having some sort of faith. We have faith invested in different persons, in different things, in different situations. हमने अपनी श्रद्धा कहीं ना कहीं निवेश की हुई है, किसी ना किसी व्यक्तियों में, किसी ना किसी पदार्थों में, परिस्थितियों में. We are Shraddha Maya. We are constituted of Shraddha, of faith. हम श्रद्धामय हैं, श्रद्धा से बने हुए हैं. So we want to shift. We want to turn the direction of our faith. तो हम अपने श्रद्धा की दिशा को बदलना चाहते हैं. But one thing which keeps us from
shifting our faith to Krishna, to Lord Krishna to protect us, is we expect to know in advance how he's going to protect us. तो एक चीज जो हमें रोकती है अपनी श्रद्धा को कृष्ण में लगाने से कि कृष्ण की जो रक्षा क्षमता है, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, वो ये है कि हम पहले से ही ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण हमारी किस प्रकार से रक्षा करेंगे. किस प्रकार? So this is one of the lessons of this pastime of Lord Krishna lifting Govardhan Hill. तो ये जो लीला है जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण कर रहे हैं, उससे एक शिक्षा ये भी मिलती है. The Brajvasis were not aware how Krishna is going to protect them. जो ब्रजवासी हैं उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण किस प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे. And who could have guessed? और कौन इसका अंदाजा लगा सकता था? No one could have guessed what Krishna will do. कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि कृष्ण क्या करेंगे. Krishna is full of surprises. कृष्ण आश्चर्य से पूर्ण है. आश्चर्य से पूर्ण है. See? Yes. Krishna आश्चर्य है पूर्ण से. Huh? कृष्ण सबको हैरान करने वाले हैं. Oh, now he's fixing my. Sorry. Krishna is giving reassurance also that it is quite possible that. No, that's not what I wanted. That it is the case that Krishna will protect. तो कृष्ण यहाँ पर हमें दोबारा से आश्वासन दे रहे हैं कि वो रक्षा करेंगे. He is telling this to Arjuna in the Bhagavad Gita. भगवत गीता में वो यही बात अर्जुन को बता रहे हैं. How is it? Tasmāt tvam uttishta yasho labhasva jitva shatrum bhunksva rajang samridham. Then mayai vaite nihata purvam eva nimittamatram bhava savyasachin. He's saying maya eva ete, all of these purvam eva nihata, they've all been defeated by me already. जिसमें वो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जितने भी सैनिक हैं, जितने भी शत्रु हैं, ये पहले से ही पराजित हो चुके हैं मेरे द्वारा. Therefore, he's saying, stand up and fight, O left-handed one. इसलिए वो कह रहे हैं कि खड़े हो और युद्ध करो. लेफ्ट-हैंडेड सव्य साच. Yeah. Yes. Oh, left-handed one. Yes, Arjuna was actually ambidextrous. I always give my translators a hard time. अर्जुन दोनों हाथों से दक्ष थे. Oh, okay. Yes, dono hato se daksh. Daksh hai. Yes. So he's reminding Arjuna, you're a very good fighter. Not only you can fight right-handed, but also left-handed. तो वो अर्जुन को स्मरण करा रहे हैं कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा हो. ना तुम सिर्फ दाहिने हाथ से युद्ध कर सकते हो, परंतु बाएं हाथ से भी कर सकते हो. But he's also telling him everything's actually already been done. और उनको बता रहे हैं कि वास्तव में ये युद्ध हो चुका है. Now at this point you may say, if you were Arjuna speaking with Krishna, and if you were a little bit cheeky, तो अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आप ये बात कह सकते थे कृष्ण से, अगर आप थोड़े बहुत चीकी हो. cheeky ho. I heard cheeky. So you might say, oh well,
Krishna, you've already done it, so what's the need for me to do anything? तो कृष्ण आप सब कुछ अगर कर चुके हैं तो मेरे करने की आवश्यकता ही क्या है? Okay, now, if you are Krishna, how would you reply to you who are Arjuna being cheeky? अगर आप कृष्ण हैं तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे अपने आप को जो अर्जुन की तरह ये प्रश्न पूछ रहे हैं? How would you reply? किस प्रकार से आप उत्तर देंगे? You would just stand there completely baffled by what Arjuna just said. आप वहां पर खड़े होंगे पूर्ण रूप से भ्रमित होकर कि जो भी अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत किया है आपके सामने. You'd say, "Wait, Arjuna, I have to go think about this for a while." तो आप कहेंगे रुको रुको अर्जुना, मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पे सोचने के लिए. Huh? What would you say? आप क्या उत्तर It's देंगे? a pretty good, I mean, Krishna says it's already a done deal, and now he's saying, go fight. Why should I fight? It's already a done deal. कृष्ण कह रहे हैं कि इस पहले से ही युद्ध हो चुका है, तुम बस जाके एक निमित्त मात्र बनो. और अर्जुन कह रहे हैं कि अगर पहले से ही हो चुका है तो मेरे लड़ने की आवश्यकता क्या है? And don't say achintya beda beda. और यहाँ पर अचिंत्य भेदा भेद मत कहिए. Everyone is baffled. Yeah, maybe Arjuna's right. Maybe he should go to the forest. क्या शायद अर्जुन सही बोल रहा है, शायद उसको जंगल चले जाना चाहिए. No? Should he go to the forest? क्या उसको वन में चले जाना चाहिए? Maybe we should all go to the forest. तो हम सबको वन में चले जाना चाहिए. What is Krishna's purpose in all of this? कृष्ण का क्या उद्देश्य है इन सब में? He wants Arjuna to fight, okay. Why does he want Arjuna to fight? तो वो क्यों चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे? He wants Arjuna to take credit. He wants Arjun to take credit, okay. Yeah, he wants Arjuna to take credit. It's devotional service. Okay. चाहते हैं कि उसका जो श्रेय है अर्जुन को मिले और ये अर्जुन के लिए भक्तिमय सेवा है. Krishna is the supreme teacher. This is he is Adi Guru, he is Jagat Guru, right? कृष्ण जगत गुरु हैं. And good expert teachers, they know how to take us from whatever position we're in to move us step by step to where we need to go. जो भी कोई दक्ष शिक्षक होता है वो जानता है कि अपने विद्यार्थी को वो जिस भी स्तर पर हो वहां से उठाकर एक एक कदम आगे बढ़ा सही दिशा में आगे ले जाए. So Krishna has some purpose with Arjuna to bring him from his attitude with which the Bhagavad Gita begins to the position of understanding himself to be the Lord's agent. तो कृष्ण का उद्देश्य है कि अर्जुन को इस दृष्टिकोण से उठाकर जिस दृष्टिकोण से भगवत गीता की शुरुआत हुई थी इस दृष्टिकोण तक पहुंचाना कि वे भगवान के सेवक हैं, भगवान के निमित्त मात्र हैं. So there's a reassurance that you don't have to worry about anything, everything's taken care of, and you must be my agent. तो यहाँ पर वे पुनः आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये चीज पहले से हो रखी है और साथ ही साथ तुम्हें मेरा यंत्र बनना है. But in the case of the Vrajvasis, he has a different purpose. परंतु यहाँ ब्रजवासी के परिवेश में उनका उद्देश्य एक अलग है. Aside from the lesson to Indra, he also wants to give a special opportunity to
the Brajbasis. यहाँ पर इंद्र को सबक सिखाने के साथ साथ वो एक विशेष अवसर प्रदान करना चाहते हैं सभी ब्रजवासियों को। First of all, he's going to demonstrate that he keeps his promises. सबसे पहले वे इस बात को स्थापित करेंगे कि जो उन्होंने वादा किया है वो उसको पूरा निभाते हैं। So ayam me vrata āhitaḥ. I've made a vow. ayam me vrata, मैंने ये व्रत लिया है। Satya vratam satya param tri satyam satyasya nihitam cha satye. The demigods prayed to Lord Kṛṣṇa in the womb. Your vrata is satya. It is true, it is real. जब कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो सभी देवताओं गण वहां पर आके प्रार्थनाएं अर्पित करते थे और उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा सत्य, कि जो भी आपने व्रत लिया है वो हमेशा सत्य होता है। You fulfill your vows. आप अपने वादे को पूरा करते हैं। And so you give example for us in fulfilling our vows. और इसके माध्यम से आप हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो हमने व्रत लिया है कि हम उसको पूरा करें। But he has another purpose, and that is to give the Brajbasis opportunity to have his darshan 24/7. परंतु इसके माध्यम से वो ब्रजवासियों को एक ऐसा अवसर देना चाहते हैं कि सभी ब्रजवासी उनका दर्शन ले सकें 24 घंटे सातों दिन। It's a problem for the Brajbasis. ब्रजवासियों के लिए एक समस्या है। They only get to see Krishna at certain times in the course of a day. एक दिन के अंतकाल में कुछ ही समय के लिए उनको कृष्ण के दर्शन मिल पाते हैं। And it's never enough. और वो कभी भी पर्याप्त नहीं होता। It's never enough. Krishna is too much attractive. कृष्ण इतने ज्यादा आकर्षक हैं, वो कभी पर्याप्त नहीं होता दर्शन। He is so attractive that the gopis are practically cursing Lord Brahma just because he made eyelids. वो इतने आकर्षक हैं कि गोपियां लगभग ब्रह्मा जी को श्राप दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पलकें बनाई हैं। And so in the course of a day, Krishna he's leaving the cowherd village, he's going to the forest, so then the gopis can't see him. Then he's coming back, then the gopas can't see him, and so on. सुबह जब वो गायों को चराने के लिए जाते हैं तब गोपियां उनको नहीं देख पाती, जब शाम में वापस आते हैं तो उनके साखे गोपगण नहीं देख पाते। इस प्रकार से Big problem. Finally solved with Govardhan Leela by lifting Govardhan hill and making himself, creating a temple in which he is the Lord in the temple. तो इतनी बड़ी समस्या ये पूरी हो जाती है इस गोवर्धन लीला में, जब वो गोवर्धन को धारण करते हैं सभी ब्रजवासी का दर्शन कर पाते हैं। It's described in other texts that although there were all of the Brajbasis were there, some of them were near Krishna, some were further away, some were behind him. तो अन्य श्लोकों में इस प्रकार का व्याख्यान आता है कि जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया हुआ था, कुछ ब्रजवासी उनके बिल्कुल पास में थे, कुछ उनसे पीछे थे, कुछ बिल्कुल पीछे थे। But they all felt that they experienced being directly with Krishna in front. परंतु सभी ने इस प्रकार से अनुभव किया कि कृष्ण बिल्कुल उनके सामने ही खड़े हैं। For 7 days, 7 nights. 7 दिन और 7 रात्रियों के लिए। No problem about eating, sleeping. किसी प्रकार के खाने की, सोने की कोई समस्या नहीं। They didn't have to go to the bathroom. उनको बाथरूम नहीं जाना पड़ा। None of these things that interrupt us constantly with our gross material bodies. इस प्रकार का किसी भी कोई हस्तक्षेप नहीं था जो इस स्थूल शरीर के माध्यम से आता है। So this is a different purpose of Krishna, but it's also the same purpose. He's bringing the devotees closer to himself. तो ये एक अन्य उद्देश्य था कृष्ण का,
और ये वही उद्देश्य था कि कैसे भक्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाना. And by this, he is simultaneously protecting them and simultaneously is teaching a lesson to Indra. और इसके माध्यम से साथ ही साथ वो शिक्षा दे रहे हैं, इंद्र को सबक सिखा रहे हैं. And simultaneously, he's giving us this pastime to meditate on, to remember, to speak about. और इसके साथ साथ हमें ये अवसर दे रहे हैं कि हम इस लीला का स्मरण कर सकें, इसका श्रवण करें, कीर्तन करें. And he gives Srila Prabhupada one of the many reasons he gives to confirm that Krishna is indeed the Supreme Personality of Godhead. और इसके माध्यम से वो श्रीला प्रभुपाद को ये कारण, एक और कारण दे रहे हैं कि वो स्थापित कर सकें कि वास्तव में कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. He will say he is Param Purushottam Bhagavan because he lifted Govardhan hill. श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं क्योंकि उन्होंने गोवर्धन धारण किया था. And then he will challenge, can you lift Govardhan hill? और उसके बाद वो चुनौती देते थे, क्या आप उठा सकते हो गोवर्धन? Can you imitate? क्या आप नकल कर सकते हो? Imitation is नकल करना. nakal? Yeah. No, it's obvious we cannot. So anyway, Prabhupada gives this as a clinching, as a decisive reason why Krishna is the Supreme Personality of God. तो श्रीला प्रभुपाद इस लीला के माध्यम से ये निष्कर्ष निकालते थे, स्थापित करते थे कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है. But most of the time the residents of Vrindavan are not thinking Krishna is the Supreme Personality of Godhead. अधिकांश समय ब्रजवासी कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देखते थे. What is it? Rudantam muhur netra yugmang rijantam karamboja yugmena shatanka netram muhu shvasa kampa trirekanka kanta stitagraiva damadaram bhaktivadham. Krishna is crying. What kind of God is that? दामोदर अष्टकम के जो दूसरा स्टैंजा है उसमें व्याख्यान आता है रुदंत मुहुर नेत्र कि कृष्ण क्रंदन कर रहे हैं. ये किस प्रकार के भगवान है जो रो रहे हैं? This only the devotees can understand. ये सिर्फ भक्त समझ सकते हैं. That Krishna is so powerful that he can set aside his power and display for his devotees his weakness. कि कृष्ण भक्त को इतने प्रिय हैं कि वो अपनी जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, उसको परे रखकर जो उनकी कमजोरी है वो प्रस्तुत कर सकते हैं भक्तों के समक्ष. It is that Krishna who is so eager to protect his devotees, because these devotees he allows to see him in such condition. तो ये कृष्ण उन भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और इन भक्तों को ये अवसर देते हैं अपनी जो दूसरी ये साइड है इसको देखने का भी. And how he's going to protect? Again, it will be a surprise. और वो कैसे सुरक्षा करेंगे अपने भक्तों की, ये एक हैरानी वाली बात होगी. So similarly, we, as we pursue our devotional lives, we pray to the Lord for His protection, and we don't make a demand on the Lord, please, you protect me this way, this way, this way. No, that will be up to the Lord. How? तो जब हम अपने भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, परंतु साथ ही साथ हमें इस प्रकार का डिमांड नहीं रखना चाहिए कि हमारी रक्षा इसी प्रकार से करें. ये कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए. Our task is simply to be agent for Krishna.
हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण के हाथों के उपकरण बने। Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Some comment or discussion? किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj, thank you for the class. Like you told, Krishna always gives protection to his devotees. We may not know how he will protect, but from a devotee's perspective, how he should be dealing with it, like if there is some difficulty in his life, so he should be waiting for Krishna to protect him, or like Prabhupada also says that God helps those who help themselves. Yeah. So what should be a devotee do? जैसे महाराज ने बताया कि हमको भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे रक्षा करेंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन तो भक्त के परिप्रेक्ष्य में वो उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, जब हमको समस्या आती है तो उसे देखना चाहिए कि भगवान कैसे उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए प्रतीक्षा करें। यहाँ पर ऐसे प्रभुपद बताते हैं कि जो लोग अपने आप खुद से अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, भगवान उनको रक्षा करते हैं। Yeah, this is also the lesson of Damodar Leela. ये दामोदर लीला से भी एक शिक्षा निकलती है। And we're all familiar. Mother Yashoda, she makes so much effort that she's perspiring to tie up Krishna. और हम जानते हैं किस प्रकार से माता यशोदा ने इतना प्रयास किया और वो थक गई हैं और उनकी सांसें तेज चल रही हैं और पसीना आ रहा है। And it's only when Krishna sees or decides, okay, she's really made an effort now, then he allows himself to be tied up. और कृष्ण जब देखते हैं कि माता यशोदा ने इतना प्रयास किया है, उस प्रयास से जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो माता यशोदा के द्वारा बनने के लिए तैयार होते हैं। And Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura says this can be understood, the 2 fingers short can be understood symbolically. That one finger represents the effort, one finger represents the Lord's grace. श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो उंगल छोटी पड़ रही थी रस्सी, उससे ये टीका में लिखते हैं कि एक उंगल एक सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक उंगल है हमारे प्रयास के लिए, दूसरे उंगल है कृष्ण की कृपा के लिए। So it's a combination, and we do our part by doing our best in all circumstances. तो ये दोनों का मिश्रण है और हम अपने रूप में अपना हम सबसे अच्छा जो प्रयास है उसको करें। Always doing our best, making our best effort, and always depending on Krishna. अपना उत्तम प्रयास करना और साथ ही साथ कृष्ण पर आश्रित रहना। Tasmāt sarveshu kāleshu mam anusmara yudhyacha. He doesn't say just anusmara, and he doesn't just say yudha. He says both. तो वो अनुस्मरण युद्ध चा, तो सिर्फ अनुस्मरण नहीं कह रहे और सिर्फ युद्ध नहीं कह रहे, दोनों को साथ में करना। Sometimes we may be more focusing on the yudha and sometimes more on the anusmarana, but both are there. तो कभी कभार हमारा ज़्यादा केंद्र युद्ध पे हो सकता है, कभी कभार ज़्यादा केंद्र अनुस्मरण पे हो सकता है, परंतु ये दोनों चलने चाहिए। Like in case of Draupadi, it's also we said that Krishna was not coming because she was trying by herself, but when she like completely gave up, then only Krishna came. So how to reconcile this? Okay. Well, okay, her completely giving up was not really giving up, I would say. Her throwing her both hands in the air was her full effort. Now she has turned her effort from trying to herself defend herself to throwing herself before the Lord to have
his help. तो प्रभु ने कहा जैसे द्रौपदी का उदाहरण में हम देखते हैं, कभी हम सुनते हैं कि कृष्ण इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वो खुद प्रयास कर रही थी, तो इन दोनों बातों को कैसे समन्वय बना सकें। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि जो द्रौपदी ने शरणागति की वो उनके प्रयास का ही हिस्सा था। अंतर ये था कि अभी इस प्रकार के प्रयास में उन्होंने अपने आप को पूर्ण शरणागत कर दिया था कृष्ण के समक्ष। And the emphasis, see, in different pastimes and different episodes, there can be different emphasis. और अन्य अन्य लीलाओं में जो केंद्र है जिस पे बल दिया जा रहा है किसी एक शिक्षा पर, वो अलग अलग हो सकता है। How do you say emphasis? बल दिया जा रहा है, बल। Yeah, so in that particular episode, the emphasis is on, yes, at some point, when you realize nothing else works, then you can be then you'll be ready to say, okay, Hare Krishna. तो उस लीला में जिस शिक्षा पर बल दिया जा रहा है कि जब अन्य किसी भी प्रयास से कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे कि हाँ, हरे कृष्णा। Yes. Okay. So, yes. Thank you very much, Maharaj. Very enlightening purport. I just picked on one thing. You said the jiva is like, in a sense, essentially shraddhamaya. So, it constitutes a faith. Yes. And here, this is one end, and then another end we see, just like in our acharyas, they sing, Tumi Kripa Bindu, Shraddha Bindu Diya. That means like, yeah. So what's going on? Like if Jiva has Shraddha, so why doesn't he need an external import of Shraddha? मेरा सवाल ये था कि महाराज ने जैसे अपने लेक्चर में कहा एक जगह पे कि जीव जो है वो श्रद्धा से परिपूर्ण होता है, श्रद्धामय होता है, यानी कि श्रद्धा से बना हुआ होता है। तो सवाल ये है, तो फिर हम हमारे आचार्यों के भजनों में ये भी देखते हैं कि आप गुरु से ये मांगते हैं कि वो आपको श्रद्धा की बूंद दे, फिर बाहर से बूंद मंगवाने की जरूरत क्या है अगर अब सारा भरा हुआ है तो। Yes, so sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayo yang purusho yo yang shraddha sa eva sa. This is in the beginning, I think it's verse 3 of chapter 17, Bhagavad Gita. It's Krishna's introduction to how we all have our faith invested in the modes of nature. तो इस श्लोक के माध्यम से, जो भगवत गीता का तीसरा अध्याय 17वां श्लोक है, उसके माध्यम से कृष्ण भूमिका तैयार कर रहे हैं कि कैसे जो जीव की जो श्रद्धा है उसने उसका निवेश किया हुआ है प्रकृति के 3 गुणों में। And you've said very nicely, Kripa Bindu Diya Koroe Dase Trinapeka Atihin. Yes, I am without even a drop of faith. Well, we could say that's a kind of rhetorical expression. Faith is there, but it's invested in the wrong place. तो इस भजन के माध्यम से महाराज बता रहे हैं, ये एक उपमा, ये एक प्रस्तुत करने का एक तरीका है। वास्तव में जो जीव की श्रद्धा है उस श्रद्धा से बना हुआ है, परंतु अभी उसकी श्रद्धा प्रकृति के 3 गुणों में है और उसको हटाकर कैसे कृष्ण में लाना है, उसमें निवेश करना है। So the prayer is, please give me a drop of the right kind of faith. तो जो प्रार्थना है कि कृपया करके मुझको वो एक ऐसी बूंद दे जो सही प्रकार की श्रद्धा हो। And that will open the gate, the floodgate, so that all the faith can shift into the right vessel, into the Lord. और उसके माध्यम से एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जिससे सही प्रकार की श्रद्धा की बाण आएगी
और वो हमारे हृदय रूपी वेसल में एकत्रित हो पाएगा. Yeah, it's, I don't know if this analogy works, but we all know Vritrasura fights with Indra. Indra eventually kills Vritrasura. और वृत्रासुर का जब युद्ध होता है इंद्र के साथ और इंद्र अंतोगत्वा वृत्रासुर का वध कर देता है. It's not mentioned in the Bhagavatam, but in Rig Veda it's mentioned that the big problem with Vritrasura was that he was withholding all of the waters of the world. He was holding back all the waters, so no one could live. तो इसका जो व्याख्या है भागवतम में नहीं आती, ऋग्वेद में आती है कि समस्या क्या थी कि वृत्रासुर ने पूरे संसार का पानी एकत्रित किया हुआ था अपने पास. So finally, when Indra slays Vritra, then finally the waters are released. और जब इंद्र ने वध कर दिया वृत्रासुर का, तब सारा का सारा पानी छोड़ा गया. So you can say in a similar way, the waters of our Shraddha are being held back by the modes of nature. उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा श्रद्धा का पानी है वो सारा का सारा एकत्रित कर लिया है प्रकृति के 3 गुणों ने. But we can pierce through that dike, what is keeping back our faith. और जो श्रद्धा को पीछे रखे हुआ है उसमें आप भेद कर सकते हैं, उसको छिंद कर सकते हैं. To open a channel. And who is it who opens channels? It's Lord Nityananda Prabhu. तो उसके माध्यम से एक दरवाज़ा खुले कुछ ना, जिससे वो श्रद्धा का पानी बह सके. और ये दरवाज़ा कौन खोलता है, ये कौन छेद कर सकता है? ये नित्यानंद प्रभु, who is also Adi Guru. जो आदि गुरु हैं. जो आदि गुरु है. Shri Nityananda Prabhu ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, Yeah. yes. Thank you so much, Maharaj, for very wonderful class. You said Krishna also likes to surprise himself in things. And Krishna also says in Bhagavad Gita, he knows the past, present and future of all living entities. And he has given free will also to living entities. And the living entities also give him surprise. So how to reconcile this, that when he is aware that how a jiva is going to act, and jiva has free will also. So. There's always that question just at the end of the class when everybody's ready to go for prasadam. तो कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं और साथ ही साथ जीवा की स्वतंत्र इच्छा भी है. तो अगर वो पहले से भविष्य जानते हैं तो यानी सब चीज़ प्री डिसाइडेड है, तो फिर फ्री विल का अर्थ क्या हुआ? Yes, this is a philosophical, this is a problem of the philosophy of religion, which has been exercising the best philosophers for millennia. जो धर्म का दर्शन है, जिससे संबंधित प्रश्न है, और ये आज से नहीं कई कल्पों से है. And I doubt seriously that we're going to solve it just right here and now. और मुझे संशय है कि हम इसको रिजॉल्व अभी कर पाएंगे यहाँ पर. I would simply say this is one of the wonderful things, that there is both free will and there is divine omniscience. तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि जीव की फ्री विल भी है और साथ ही साथ भगवान की जो दिव्य सर्वज्ञता है वो भी है. And my personal guess is that for the Supreme Lord, this is not a problem at all.
और जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि परम भगवान के लिए ये कोई समस्या नहीं है. Not a problem. Yeah, our limited intellect has a problem. हमारा जो सीमित बुद्धि है उसके लिए समस्या है. But for Krishna's unlimited intellect, there's no problem. और कृष्ण की अनंत सीमित बुद्धि के लिए कोई समस्या नहीं है. So then we will say, why doesn't Krishna tell us straight out what is the solution? तो हम कहेंगे तो फिर कृष्ण सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते हैं, इसका क्या समाधान है? Why doesn't he make it easy for us? हमारे लिए सरल क्यों नहीं कर देते? Well, it could be because he will say, even if I tell you, you won't understand. तो इसी प्रकार से कृष्ण कहेंगे अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप समझ नहीं पाएंगे. We have a little bit of free will, and it's for us to use it carefully in the Lord's service. तो हमें जो फ्री विल है उसको सावधानी के साथ भगवान की सेवा में उपयुक्त करना चाहिए. So that was my non-answer to your very good question. ये मेरा नॉन आंसर था आपके बहुत अच्छे प्रश्न के. I thought now it's going to come even more difficult. Sometimes we make a comparison of Brahma and Indra, that due to Indra's mischief, everyone came together and Brahma took all the cowherd boys away. So is it mentioned in scriptures somewhere like that? Because I believe Brahma did a greater service than Indra. Indra brought them for just 7 days, but due to Brahma, all the mothers and cows could relish Krishna for 1 year. And he did not commit an offense in terms of killing and attempting to kill Vaishnavas, but Indra did that offense. Yeah, I think you'll have to take up your point with Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura. Because I believe it's him who is claiming that Lord Brahma is the more serious offender, isn't it? Isn't that? Yeah. So I think you'll have to take it up with him. I'm sorry. But while you're taking that up with him, I think for us to note is that Vishwanath Thakur wants to make a point. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तथ्य को यहाँ स्थापित करना चाहते थे. And his point is that to separate the devotees from the Lord, it's not a good idea. कि भक्तों को भगवान को भक्तों को अलग करना ये कोई अच्छा विचार नहीं है. Of course, this is an example of, again, Krishna making a solution which no one would have thought of. Certainly not Lord Brahma. और ये एक इस उदाहरण को दोबारा से स्थापित करता है कि कृष्ण ने किस प्रकार का समाधान निकाला, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी सोच नहीं पाए. You know, Krishna sees, oh, Lord Brahma's taken all my friends away. Oh, he's taken the calves too. All right, no problem. He expands himself. He makes clones of everyone. तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा ने मेरे सारे सखागण को चुरा लिया है, सारे बछड़ों को भी चुरा लिया है. तो कहते हैं कोई समस्या नहीं, और उन्होंने तुरंत अपना विस्तार कर दिया. So, and this was all fun. Everything was fun. Lord Brahma is also learning some lesson, but he's also Krishna's devotee. तो ये सब भगवान अपने आनंदमय लीला कर रहे थे, और यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए भी कुछ शिक्षाएं थी. Think how much trouble it must be to be God all the time. सोचो हमेशा भगवान बनना भी कितना बड़ा समस्या होता होगा.
all the time, everyone is coming with their prayers. हमेशा के लिए भगवान हर कोई उनको पास जा रहा है अलग अलग प्रार्थनाएं लेकर. I was thinking about it last night. The temple room is packed, right? मैं कल रात के बारे में सोच रहा था कि पूरा मंदिर कक्ष भरा हुआ था. Everyone is offering their sincere prayers to the Lord. हर कोई भगवान को अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा है. Are Baba, the Lord has to hear all those prayers. भगवान को सारी प्रार्थनाएं सुननी पड़ती हैं. And everyone's expecting him to do something about them. और हर कोई अपेक्षा कर रहा है कि कुछ करेंगे भगवान. So, Krishna, he has to also get a break. तो कृष्ण को भी ब्रेक चाहिए. Break chahiye. Okay. Hare Krishna, bahut dhanyavad. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj ki. Śrīla Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So let us thank Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.